Dear students, today we are going to learn the first poem from the poetry section of your textbook, Prayer, written by G. A. Mehjoor. Dear students, now let's have a brief introduction of the poem. The poem Prayer is addressed to God. The poet makes certain wishes before Almighty in his supplication. He implores him to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge. He requests Almighty to save him from laziness and weakness. Being a firm believer, the poet asks his Lord to always keep him under his protection. The poet does not bother if people abandon him, but he cannot bear any kind of separation from God. प्यारे बच्चों, आगे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक छोटी सी क्लिप सुने जिससे आपकी यादें भी ताज़ा होगी स्कूल की और मेरी भी। चलिए सुनते हैं।
प्यारे बच्चों, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में पोइम है, दरअसल में ये इसी कश्मीरी पोइम की जो महजूर ने लिखी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो प्रोफेसर जी आर मलिक ने की है। इस पोइम में, इस दुआ में शायर अपने रब से दुआ करता है, जैसे हर कोई दुआ रब से ही करता है, और इस दुआ में वो बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार करता है। शायर रब से दरख्वास्त करता है कि वो उसे सीधी राह दिखाएं, सीधे रास्ते पे चलाएं और जहालत दूर करके उसे इल्म की खजाने से सैराब करें। शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है, इल्तिजा करता है कि वो उसे काहिली से बचाए, कमजोरियों से बचाए। शायर अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखता है और उसे यकीन है कि अल्लाह ताला उसकी सुनेगा, इसीलिए वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो उसे हमेशा उसकी हिफाजत में रखें। शायर को इस बात का कोई गम नहीं है कि लोग उसे छोड़ें, लेकिन अल्लाह ताला की दूरी, अल्लाह ताला की नाराज़गी उसे ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। Now about the poet. Pirzada Ghulam Ahmad Mehjoor, popularly known as the Shair-e-Kashmir, was born on 1st August 1887 at Mitri Gaon, Pulwama. पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर, जिन्हें आमतौर पर शायर कश्मीर भी कहा जाता है, पैदा हुए मित्री गांव पुलवामा में 1st अगस्त 1887 को। He was the first poet of Kashmiri language to incorporate themes closer to life and times of his age. His poetry is emblem of nationalism. महजूर ने रोज़मर्रा के मामलात को अपनी शायरी का उन्वान बनाया। उन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को, अपने दौर के मामलात को अपनी शायरी में उजागर करने की कोशिश की। उनकी शायरी में हुब्ब वतन का जज्बा बहुत ही आयान है। Mehjoor is the first and the only poet till now on whom a full-length movie was made. Thus he happens to be only poet of Kashmir to have risen to the heights of legend in his lifetime. महजूर ने शायरी में जो मकाम हासिल किया, आज तक कोई ही शायर वो मकाम हासिल कर चुका है। महजूर 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए on April 9 in the year 1952. Now let's have a loud reading of the poem. Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailings and pleas. Cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with patience and hope. Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earnest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity.
Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men I, and they call me Mehjoor. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. Now, the summary of the poem. The poem is addressed to God. The poet implores his Lord to guide him to the path of truth, as he has been living the life of ignorance so far. So he requests his Lord to pour upon him the nectar of knowledge. He pleads his Lord to hear his wailings and pleas and remove all his ills and pains. He prays God to save him from sloth and infirmity. He requests Lord to fill his heart with patience and hope. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि ये पोइम शायर अपने खुदा से अपने रब से मुखातिब करता है। शायर रब से दुआ करता है कि मुझे सीधी राह दिखा। वो आज तक गफलत में जहालत में रहता आया है, सो अपने रब से दुआ करता है कि मुझ पे इल्म के दरवाजे खोल दे। वो रब से इल्तिजा करता है कि मेरी दुख दर्द मेरी परेशानियों को मिटा दे। वो रब से दुआ करता है कि मुझे हर किस्म की काहिली बेसब्री से बचा दे। वो अल्लाह से दुआ करता है कि मेरे रब मेरे दिल को ईमान से, सब्र से और उम्मीद से भर दे। The poet does not want to sing the sleep-inducing songs. He wants to sing the songs that can fill enthusiasm and life into the dead. He wants his songs to inspire people with love and help in removing the hatred and bitterness among people. As Lord has brought him to bloom like the flowers of spring that flourish with the earnest breeze, so he requests God to protect him from the burning heat of summer that can cause him to fade away. शायर ऐसे गाने नहीं गाना चाहता है जो लोगों में काहिली पैदा करे। वो ऐसे गाने गाना चाहता है, वो ऐसी शायरी लिखना चाहता है जिससे एक मुर्दे में जान आ जाए। वो चाहता है कि उसके गानों से लोगों में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और नफरत व दूरियां मिट जाएं। चूंकि रब ने शायर को सुबह के फूलों की तरह ब्लूम किया है, तो वो अपने रब से इल्तिजा करता है कि ए मेरे रब मुझे गर्मी से बचा दे, मुझे तकलीफ़ों और मुश्किलात से बचा दे ताकि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। At last, the poet confesses to the Lord that though in form he is human, but in reality he is far from humanity. So he requests God to save him from the tough tests so that there may be no shame on his human form. The poet feels forsaken by the people, but he does not bother about that, but requests his Lord not to abandon him, as he does not want to be separated from him. आखिर पे शायर ये इकरार करता है कि वो अगर जिस शक्ल से इंसान लगता है लेकिन उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सो वो अपने रब से, अपने लॉर्ड से, अपने खुदा से दुआ करता है कि मुझे इम्तिहानों में ना डाले, क्योंकि मैं इम्तिहानों में अच्छे से गुजर नहीं सकता हूँ। मैं आपके इम्तिहानात को पार नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरी इंसानियत शर्मनाक हो जाएगी। शायर को ऐसा लगता है कि लोगों ने उसे दूर छोड़ दिया है,
लेकिन उसे उससे कोई गम नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर लोग उसे छोड़ें भी, लेकिन अल्लाह ताला या उसका रब उसे ना छोड़े। Now the assessment. The poem is written by: name the blessings that the poet prays for. Choose the correct one. The poet wants to sing the songs that can induce sleep in the people, inspire life into the people. Thank you so much.